Dear students, Assalamu alaikum. This is your teacher Irfan majeed bhat from High School Mandigam. Today let me teach you the steps of the holozoic nutrition. Holozoic nutrition क्या होता है? It is the type of nutrition in which an organism consumes solid and complex food. न्यूट्रिशन का वो टाइप जिसमें एक ऑर्गेनिज्म सॉलिड फूड और एक कम्प्लेक्स फूड जो है वो इंजेस्ट करता है, वो खाता है, तो फिर उसके बाद उसे डाइजेस्ट करता है, देन एब्जॉर्प्शन एंड देन assimilation, then ejection, and this type is called as holozoic nutrition. The organism taking solid food for their nutrition is called holozoic nutrition. For example, animals and humans, dogs, cats, and even in unicellular protozoans you can see the holozoic nutrition. For example, in amoeba and then paramecium, and maybe holozoic nutrition होती है. So now let me tell you about the steps of the holozoic nutrition: ingestion, digestion, absorption, and then assimilation, then ejection. So these are the steps of the holozoic nutrition which I would like to discuss one by one. First step जो ingestion है, it is the taking in of solid food with the help of temporary or permanent mouth. तो इंजेक्शन का मतलब होता है खाना, कोई भी चीज़, जो भी फूड हम खाते हैं उसे हम इंजेस्ट करते हैं, हम मुंह में डालते हैं, लेकिन दिस माउथ कैन बी टेम्पररी और इट कैन बी परमानेंट आल्सो. यूजुअली इट इज़ परमानेंट, क्योंकि ह्यूमंस में हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, तो इन ह्यूमंस इट इज़ अ परमानेंट माउथ, and in higher animals also it is a permanent mouth, like in horses, cats, dogs, etc. Then in unicellular organisms like amoeba you can find pseudopodia, which is not there is no permanent mouth. Pseudopodia से ये amoeba जो है ये अपने food particles grab करता है. Then paramecium also, they by the beating of the cilia they bring the food to cytosome or cell mouth. उनमें एक cytosome होता है paramecium में, जिनसे वो अपना food particle है वो grab करते हैं. लेकिन amoeba में क्या होता है, वहाँ पे कोई permanent mouth नहीं होता है amoeba में. Just by the help of pseudopodia, जो एक जिन्हें हम false feed भी कहते हैं, projections होते हैं सेल के बाहर, उनसे वो अपने food particles जो है वो grab करता है. So this was about the ingestion. Now next step is digestion, which is very important step of the holozoic nutrition. Digestion is the breakdown of the complex food into simple and absorbable forms. जो भी हम complex food खाते हैं ये digest हो जाता है simple और absorbable form में in the alimentary canal with the help of digestive enzymes in animals including the humans. But in case of the protozoans like amoeba, food vacuole fuses with the lysosome forming phagolysosome. तो लाइसोसोम क्या होता है, इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, तो फूड वैक्यूल इसके साथ मिलके फैगोलाइसोसोम बनता है. दैट आई विल डिस्कस इन माय नेक्स्ट लेक्चर रिगार्डिंग एमोबा. और लाइसोसोम में बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि इस फूड को बाद में ब्रेक डाउन करते हैं इनसाइड द सेल. द नेक्स्ट स्टेप इज एब्जॉर्प्शन. The simple food is transported to the blood or the cytoplasm, and usually in humans it takes place in the intestines, through the walls of the intestines. So इसे हम absorption कहते हैं. जब ये food molecules blood के साथ mix हो जाते हैं through the walls of the intestines, तो इसे हम absorption कहते हैं. After the breakdown, यानी कि after the digestion, तो intestines में small hair like projections होते हैं from inside, जिन्हें हम villi कहते हैं, and there are lacteals also which help in the absorption of food. So यहाँ पे आप देख भी सकते हैं इस स्क्रीन पे. तो उसके बाद जो प्रोटोजोन्स होते हैं वहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन हो जाता है, बिकॉज दे आर यूनिसेलुलर लाइक एमोबा. उनमें सिंपल डिफ्यूजन हो जाता है, एंड विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन तो उनमें एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड हो जाती है. द नेक्स्ट स्टेप इज एसिमिलेशन. तो एसिमिलेशन क्या होता है, अब फूड एब्जॉर्ब होने के बाद these food particles they become the part of the cells, and the cells use these food particles for getting the energy for their growth, repairment, and then development. So the absorbed food used for the formation of the constituent of the cells, that is called assimilation. ये body growth में काम आता है और and other functions also. तो प्रोटोजोन्स में सेल ऑर्गेनल्स इससे सेल ऑर्गेनल फॉर्मेशन हो जाती है एंड सेल डिवीजन हो जाता है एसिमिलेशन से, जैसे कि एमोबा में. द नेक्स्ट स्टेप इज इजेक्शन.
Ejection, it is the removal of the undigested food. जो भी हम food खाते हैं, जो भी इसका undigested part रह जाता है, वो that is thrown out, and that step is called the ejection. In humans, there is an anal passage responsible for the throwing out of the undigested food, or we can call it ants. So in case of unicellular organisms like amoeba में the food vacuoles they fuse with the cell membrane at any place. ये कोई fixed इनमें structure anus-like structure नहीं होता है, तो कहीं पर भी cell membrane के साथ ये waste material जो है वो fuse हो जाता है और then it is thrown out. But in case of paramecium there is cytopage or cell ends. तो वहाँ पे cell ends एक pore होता है जहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो बाहर दे आर थ्रोन